Namaskar, I am Anand and you are watching the screen. Here are the questions of exercise 8.2. आप यहाँ पर exercise 8.2 के questions देख रहे होंगे. In this class, I am going to solve the questions of exercise 8.2. आज की कक्षा में मैं exercise 8.2 का ही question solve करने जा रहा हूँ. Let's see the first question. यहाँ आप first question देख रहे होंगे. Find the coefficient of x to the power 5 in x plus 3 to the power 8. X plus 3 is a binomial, and in this question ask us what is the coefficient of x to the power 5. Let's see the solution. To start the solution, we recall some most important formula which do we need during the solution of questions of exercise 8.2. Let's see here. This is the r plus 1 term, which is also known as the general term. In the expansion of a plus b to the power n is NCR into a to the power n minus r into b to the power r. We need the help of this formula to solve the questions of exercise 8.2. Also, we need the help of the formula middle term. तो एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को टी आर प्लस वन, जिसको जनरल टर्म ऑफ द बाइनोमियल टर्म के एक्सपेंशन में बोला जाता है, एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर, इस फार्मूला का ज़रूरत होगा. इसके साथ साथ मिडल टर्म से रिलेटेड फार्मूला का भी ज़रूरत होगा. जब ज़रूरत होगा उस समय मिडल टर्म के फार्मूले को रिकॉल किया जाएगा. तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1. आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं. So I am going to write the question number 1, or let's see. In this question ask us, find the coefficient of x to the power 5 in x plus 3 to the power 8. x plus 3 to the power 8 के एक्सपेंशन में x to the power 5 के coefficient पूछा जा रहा है यहाँ पर. Hope that there is no problem to understand the question. Question को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. Let's see the solution. So find the coefficient of x to the power 5 in the expansion of x plus, see here, x plus 3 to the power 8, x plus 3 to the power 8. Let's see the solution. Let the x to the power 5 consist of general term or r plus 1 term. So we recall here NCR into, instead of a we have a to the power n minus r into b to the power n. From question it is clear that a equal to x
b equal to 3, and here n equal to 8. Now from the general term, tr plus 1 equal to 8 c r into x to the power 8 minus r into minus 3. Here instead of b we have minus 3. Let's see. Sorry, instead of b we have 3. So we write down here 3 to the power 8. So x to the power 8 minus r, the value of this one is 5. So x to the power 8 minus r will be x to the power 5. Of that there is no problem to understand at this step. Therefore 8 minus r equal to 5. Therefore r equal to 8 minus 5 equal to 3. So we putting the value of r here in general term. Now putting the value of r in the expression of general term will be t r plus 1. It means that 4 plus 1 here. Let's see, r equal to 3. So here will be 3 plus 1 equal to 8 c3 into x to the power 8 minus 3 into 3 to the power 3. In this question ask us what is the coefficient of, let's see, the next step here will be 8 c3 into x to the power 5 into 3 to the power 3. The value of r is 3. So in this question ask us what is the coefficient of this one, x to the power 5. So these are the coefficient of x to the power 5. Now we find out the value of this one. So let's see that the required coefficient will be equal to 3 to the power 3 into 8 c3.
equal to here will be 27 into factorial 8 by factorial 3 into factorial 5. So the next step will be 27 into 8 into 7 into 6 into factorial 5 by the expansion of factorial 3 will be 3 into 2 into 1 into factorial 5. We cancelled out factorial 5 and here will be 3 9 ja 27, 2 4 ja 12, and after the multiplication we get here 1512, 1512. So this one will be the answer. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. लेट्स सी द सॉल्यूशन वंस अगेन। एक बार सॉल्यूशन को फिर से देख लीजिए। ये आपका ऑन स्पॉट सॉल्यूशन किया जा रहा है। ये पहले से सॉल्यूशन तैयार नहीं है। यहाँ क्लास लेने की बिल्कुल अलग तरीका है। ये नहीं कि पहले से पीडीएफ तैयार है फिर उसको शेयर कर दिया जा रहा है। बिल्कुल ऑन टाइम जैसे ऑफलाइन क्लास में जैसे होता है बिल्कुल उसी तरह का क्लास यहाँ पर हो रहा है। टू गेट द इमीडिएट नोटिफिकेशन, तत्काल नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। देखिए आपका यही क्वेश्चन था, ये फार्मूले का यहाँ जरूरत था और यहाँ क्वेश्चन यही था आपका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। आज पहला क्वेश्चन यही कर रहे थे। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 टू द पावर 8। इसी के एक्सपेंशन में एक्सरसाइज पुरानी पुस्तक अगर आप देखते हैं ओल्ड बुक तो एक्सरसाइज 8.2 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और अगर नी बुक देखते हैं तो नी बुक में इस चैप्टर को हटा दिया गया है। तो ये एक्चुअली में पॉइंट ऑफ व्यू है आपका पूरा बाइनोमियल थ्योरम का आइडिया मिल जाए, एज वेल एज आपका जेई मेन और एडवांस का भी प्रिपरेशन, या जेई मेन में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई मेन का भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो लेट्स सी यही था। जनरल टर्म को देखिए यहाँ रिकॉल किया गया। फ्रॉम क्वेश्चन ये क्लियर हो गया है। ए इक्वल टू एक्स है, बी इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू 8 है। नो फ्रॉम द जनरल टर्म, ये फिर से जनरल टर्म के आधार पर ये हो गया। और 8 माइनस आर इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 जो आपका क्वेश्चन में गिवन था, यहाँ से कैलकुलेट करके आर का वैल्यू फाइंड आउट कर दिया गया, फिर पुटिंग कर दिया गया आर के वैल्यू को। आफ्टर दैट एक्स टू द पावर 5 को यदि यहाँ से निकाल देते हैं तो बाकी आपका कोएफिशिएंट हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 का। तो इन दिस वे वी फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 5 which is 1512, and hope that there is no problem to understand the solution of this question। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। ये अगर आप दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरह से सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो इसको भी सॉल्व कर देंगे। या फिर अब हम चलते हैं राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ। जनरल टर्म तो केवल इसमें फॉर्मूले को लिख देना है कि बाय व्हाट विल बी द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6। ठीक है, तो इसके एक्सपेंशन में आपका जनरल टर्म क्या होगा। तो जनरल टर्म इसमें है आर प्लस 1 है। हम लोग उसी को रिकॉल करते हैं। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आस्क अस राइट द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ write the
general term in the expansion of देख लीजिए भाई पहला क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 6 चलिए इसके सॉल्यूशन को देख लीजिए लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन इट इज क्लियर दैट a equal to x square b equal to minus y and n equal to 6. Now recall the general terms formula or we write down here we know that tr plus 1 equal to n cr into a to the power n minus r into b to the r. Now putting the value of n r a b. Now putting the values of n a r and b. So here will be n tr plus 1 equal to here will be the value of n is 6, so 6 cr 6 cr, the value of a is x square 6 minus r into the value of b is minus y to the power r. So hope that there is no problem to understand the solution of this question. So at this step we get the answer. So this is the answer. If you have problem write into the comment box. यदि आपका कोई problem है तो आप comment box में जरूर लिखिएगा. Let's see the question number 4. Write the general term in the expansion of. Let's see the question number 4. This is find the write the general term in the expansion of x square minus yx to the power 12 and x not equal to 0. So let's see here. Question number 4. X square minus y into x to the power 12 and x not equal to 0. Let's see the solution.
From question it is clear that here a will be x square and b will be minus yx and n will be 12. So we recall the formula of general term. So we write down here, we know that we know that tr plus 1 equal to ncr into a to the power n minus r into b to the power r. Hope that there is no problem to understand at this step. We recalled the formula. यहाँ मैं formula को recall कर लिया है. Now putting the value of n and r. Now putting the value of a, b and n. Now putting the values of n, a and b. So tr plus 1 equal to the value of n is 12 cr. Here will be the value of a is x square to the power 12 minus r, and the value of b is minus yx to the power r. Hope that there is no problem to understand up to this step. Let's see the next step of this one. Equal to 12 cr, and here will be x to the power 24 minus 2r into minus 1 to the power r into y to the power r into x to the power r. This is the expansion of this one. After there is no problem. For minus we write down here minus 1 to the power r. For y we write down here y to the power r. And for x we write down here x to the power r. So the last step here will be twelve cr, and here will be x to the power 24 minus 2r plus r. Of that there is no problem to understand at this step, and here we write down here minus 1 to the power r into y to the power r. So the final step here will be 12 cr into 24 minus 2r plus r equal to, here will be x to the power 24 minus r into minus 1 to the power r into y to the power r. This is the answer. This is the answer. Hope that there is no problem to understand the solution of this question. Let's see the next question. This is the question number 4. Sorry, question number 5. We have डन क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर लिए हैं. अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए. फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ. फोर्थ टर्म यहाँ पर पूछ रहा है. ओके, so let's see, this is also very easy question. Let's see the solution of this question. Question number 5.
Question number 5. Question number 5 asks us what? Find the fourth term. In the expansion of x minus y to the power x minus 2y to the power 12. Let's see the solution. From question it is clear that here will be t r plus 1 equal to fourth or r plus 1 equal to 4. So we write down here r plus 1 equal to 4. Therefore here r will be 4 minus 1 equal to 3. And a equal to here x and b equal to minus 2y and n equal to 12. Hope that there is no problem to understand this data. इस डाटा को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. Now recall the formula for general term. So we write down here, we know that. We know that. TR plus 1 equal to NCR into a to the power n minus r into b to the power r. Now putting the value of r, n, a, b and b. Now putting the value of values of n, r, a and b. So here will be the value of r is, let's see, the value of r is 3. So we write down here T4 equal to here will be 12C3 into the value of a is x to the power 12 minus 3 and the value of b is minus 2y to the power 3. Hope that there is no problem to understand up to this step. इस step तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा. So t to the power 4 equal to 12C3 into x to the power 12 minus 3 equal to 9 into minus 2 to the power 3 into y to the power 3. Hope that there is no problem to understand up to this step. So here will be factorial 12 by factorial 3 by factorial 9 into minus 2 to the power 3 into x to the power 9 into y to the power 3. So you can find out, यहाँ पर आप इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो देखिए वैल्यू यहाँ फाइंड आउट थोड़ा सा कर देते हैं.
और कुछ स्टेप आपके लिए भी छोड़ देंगे। तो लेट्स सी हियर। हाँ, फैक्टोरियल 12 का एक्सपेंशन आपका हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 तक ही लिखिए। फैक्टोरियल 9 कैंसल्ड आउट हो जाएगा, इसीलिए बाय आपका हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू फिर आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 9। अब -2 टू द पावर 3 इक्वल टू यहाँ आपका -8 हो जाएगा, इंटू फिर आपका हो जाएगा x टू द पावर 9 इंटू y टू द पावर 3। अब देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड अप टू दिस स्टेप। यहाँ पर फैक्टोरियल 9 आप कैंसल्ड आउट कर दीजिए। यहाँ 3 टू जा 6 होगा, ये 6 टू जा 12 हो जाएगा। आप एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दीजिए, तो आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 11 10 जा 110, 110 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 220 हो जाएगा। 220 को यदि आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सबसे पहले तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, माइनस, ठीक है। और आपका कितना हो गया 220 इंटू 8, तो यहाँ 220 इंटू 8 जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 6, ये आपका 7 हो जाए, तो -1760 इंटू आपका हो जाएगा x टू द पावर 9 इंटू y टू द पावर 3। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो फिर अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए। जनरल टर्म के फार्मूले को आप यूज कीजिए, ए को फाइंड आउट कीजिए, बी को फाइंड आउट कीजिए, आर को फाइंड आउट कीजिए, एन को फाइंड आउट कीजिए, वो जो भी दिया है एक डाटा प्रिपेयर कीजिए, और जो पूछा जा रहा है अगर एक बार फिर से जनरल टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए जनरल टर्म आपका टी आर प्लस 1 इक्वल टू है एन सी आर इंटू ए टू द पावर एन माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर है। यहाँ पर आपको कोएफिशिएंट पूछा जा सकता है, कोएफिशिएंट से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन भी हम लोग किए। यहाँ पर आपको कोई टर्म पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए कितने चीज है, यहाँ पर आर, ठीक है, फिर एन, फिर आपका ए, और फिर आपका बी है, और फिर आपका टी आर प्लस 1 है। इट मीन्स दैट 1 2 3 4 5 देयर इज द इंटर रिलेशन ऑफ 5 टर्म। ये 5 टर्म का जो है इंटर रिलेशन है। आउट ऑफ दिस 5 if 4 are given then you have no problem to find out which is not given। ये 5 में से अगर 4 आपको दिया हुआ है तो आप कोई भी 5वां निकाल सकते हैं। तो बस इसी पर बेस्ड अपन था। तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व रेस्ट अदर क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। Similarly, you can solve rest questions of this exercise. Hope that this class will be useful। आशा करते हैं यह क्लास उपयोगी होगा to the schooling students as well as the main aspirant। Hope that this class will be useful for schooling students as well as the main aspirant। JEE main
Now I am going to over these colors. इस कलर्स को अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. नो आई एम गोइंग टू ओवर दिस कलर्स. मैं इस कलर्स को ओवर करने जा रहा हूँ.